सपना देखोगे तो मुश्किलें हजारों आएंगी, लेकिन वो मंजर भी बड़ा खूबसूरत होगा जब कामयाबी नजर आएगी। नमस्कार, वेलकम टू पीटी पॉइंटर्स and in this video we are going to cover major headlines of the Hindu, Indian Express and Press Information Bureau. So without wasting any time, let's start today's discussion and our first headline is related to लोकसभा एथिक्स कमेटी, जिसको कॉन्स्टिट्यूट किया गया था स्पीकर के द्वारा इन द ईयर 2000 एंड ये परमानेंट पार्ट लोकसभा का बना था 2015 में। इसमें 15 मेंबर्स होते हैं जो कि अपॉइंट किए जाते हैं स्पीकर के द्वारा फॉर 1 ईयर एंड एनी इंडिविजुअल कैन फाइल अ कंप्लेंट अगेंस्ट अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट एंड दिस कंप्लेंट शुड इंक्लूड supporting evidence of alleged misconduct and an affidavit confirming that complaint is not false, frivolous or vexatious. Our next headline is related to World Biosphere Reserve Day, which is celebrated on November 3rd each year to raise awareness of the importance of biosphere reserves and to promote their conservation and sustainable use. इसको डेजिग्नेट किया गया था यूनेस्को के द्वारा एंड बायोस्फीयर रिजर्व्स आर आल्सो सपोर्टेड बाय अदर यूनाइटेड नेशंस एजेंसीज लाइक यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम, यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम as well as International Union for Conservation of Nature. And according to UNESCO, there are currently 748 biosphere reserves across 134 countries and इनमें से 12 sites can be found in India alone. Our next headline is related to Collegium system and ये न्यूज में भी इसलिए है क्योंकि recently Supreme Court Collegium headed by Chief Justice of India recommended to the government the appointment of 3 new Chief Justices to the High Courts of Uttarakhand, Odisha and Meghalaya. अगर हम Supreme Court के Collegium की बात करें तो it comprises Chief Justice of India and 4 senior most judges of the Supreme Court and they make recommendations for appointment to the Apex Court and High Courts. And अगर हम High Court Collegium की बात करें तो it is led by Chief Justice and 2 other senior most judges of that court. And do you know friends, Chief Justice of India and judges of the Supreme Court are appointed by the President under Clause 2 of the Article 124 of the Constitution and appointment to the office of CGI should be of the senior most judge of the Supreme Court considered fit to hold the office. Our next headline is related to इलेक्ट्रल लिटरेसी कंटेंट एंड ये न्यूज में भी इसलिए है क्योंकि नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग विल इंट्रोड्यूस एंड अपडेट टेक्स्ट बुक्स टू इंक्लूड कंटेंट ऑन इलेक्ट्रल लिटरेसी एंड इसकी शुरुआत होगी 6 to 12th क्लासेस से इन ऑल स्कूल्स बट ग्रेजुअली इट विल ऑल्सो एक्सटेंड टू करिकुलर फ्रेमवर्क फॉर ऑल कॉलेजेस and universities. It is aimed at extending the Election Commission's flagship systematic voters education and electoral participation in school and colleges. Our next headline is related to Carbon Border Adjustment Mechanism that entered into application in its transitional phase on 1st October 2023. It is European Union's landmark tool to fight carbon leakage and its transitional phase. It will only apply to imports of cement, iron and steel, aluminium, fertilizers, electricity and hydrogen. Under it, European Union manufacturers move carbon-intensive production to countries outside the region with less stringent climate policies and from 2026 it will be fully implemented. And ये न्यूज में भी इसलिए क्योंकि recently यूनियन कॉमर्स मिनिस्टर ने कहा है कि ये मैकेनिज्म अनफेयर है and India would neutralize it by levying its own carbon tax. Our next headline is related to Adaptation Gap Report 2023 जिसको इशू किया गया है यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम के द्वारा and according to it world is underprepared, underinvested and lacking the necessary planning and it has warned that instead of speeding up, progress on adapting to climate change is stalling. The report shows gap in adaptation funding is highest ever and world must take action to close the adaptation gap and deliver climate justice. Updated adaptation costs for developing countries are estimated at $215 billion to $387 billion annually. And it found that public finance to developing countries fell 15%
to around $21 billion in 2021. Our next headline is related to Comprehensive Nuclear Test Ban Treaty. And ये न्यूज में भी इसलिए है क्योंकि रशियन प्रेसिडेंट signed a law revoking Russian ratification of the Comprehensive Nuclear Test Ban Treaty. अगर हम ट्रीटी की बात करें तो ये एक मल्टीलेटरल ट्रीटी है जो कि बैन करता है ऑल न्यूक्लियर एक्सप्लोजन्स वेदर फॉर मिलिट्री और पीसफुल पर्पसेस. यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के द्वारा इसको अडॉप्ट किया गया था इन 1996 में, बट इट इज स्टिल इन द रेटिफिकेशन स्टेज एंड इंडिया, चाइना, यूएसए, डेमोक्रेटिक पीपल्स रिपब्लिक ऑफ कोरिया, ईरान, Pakistan, Israel and Egypt have not ratified it. Our next headline is related to UNESCO Creative Cities Network and ये न्यूज में भी इसलिए है क्योंकि recently city of Kozhikode in Kerala and Gwalior from Madhya Pradesh was added in UNESCO's Creative Cities Network. अगर हम इस नेटवर्क की बात करें तो इसको क्रिएट किया गया था 2004 में to promote cooperation among cities that have identified creativity as strategic factor for sustainable urban development. At present, it includes 350 cities in over 100 countries. And apart from Kozhikode and Gwalior, Varanasi, Srinagar and Chennai are part of this network. Our next headline is related to Bletchley Park, जो कि लंदन के नॉर्थ में है, and it is considered by many to the birthplace of modern computing, and advances made there in cryptographic and intelligence processes during World War II contributed greatly to the Allied effort and may have shortened the war by couple of years. बाकी अभी न्यूज में इसलिए है क्योंकि वर्ल्ड्स फर्स्ट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सेफ्टी समिट को ब्लेचले पार्क में होस्ट किया गया है. बाकी समिट से रिलेटेड कंटेंट हमारी वेबसाइट पे भी अवेलेबल है एंड लिंक अवेलेबल करा दिया गया है डिस्क्रिप्शन में. और नेक्स्ट हेडलाइन इज रिलेटेड टू फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, जिसको स्टैब्लिश किया गया था 1989 में बाय द G7 टू एग्जामिन एंड डेवलप मेजर्स to combat money laundering. It sets standards and promote effective implementation of legal, regulatory and operational measures for combating money laundering, terrorist financing and other related threats to the integrity of international financial system. And ये न्यूज में अभी इसलिए है क्योंकि according to recent report by Financial Action Task Force, a violent extremist organization under investigation in India, collected funds through well-structured networks including offline and online fundraising mechanisms such as circulating QR codes and account details. Our next headline is related to National Efficient Cooking Program एंड एनर्जी एफिशिएंट फैंस प्रोग्राम, जिनको रिसेंटली लॉन्च किया गया है. अगर हम नेशनल एफिशिएंट कुकिंग प्रोग्राम की बात करें तो इट इंट्रोड्यूसेस इंडक्शन बेस्ड कुक स्टोव्स ऑफरिंग एट अ कॉस्ट एडवांटेज ऑफ 25 to 30% ओवर ट्रेडिशनल कुकिंग मेथड्स, प्रॉमिसिंग बोथ एनर्जी सेविंग्स एंड कॉस्ट इफेक्टिव कुकिंग सॉल्यूशंस. An energy efficient fans program focuses on deploying energy efficient BLDC fans with a goal of distributing 1 crore ceiling fans. Our next and last headline is related to first international cruise liner COSTA SERENA, जिसको लॉन्च किया जाएगा अंडर द इनिशिएटिव ऑफ देखो अपना देश इन मुंबई. Costa Cruises is expected to carry approximately 45,000 passengers in next 2 months. अगर हम देखो अपना देश इनिशिएटिव की बात करें तो it is launched as an appeal by the Prime Minister of India to the middle class to prefer the domestic tourism over international tourism. So with this, let's conclude our today's discussion. Thanks for listening, and for regular updates, you can follow us on various social media platforms.